Okay, so let's begin. So, आज हम जो है वो एक नए टॉपिक का आगाज करेंगे जो अब तक हमने टच नहीं किया, बट इट्स एन इम्पोर्टेंट टॉपिक। जी। हम्म। आपने उन पेपर्स को समझना है और उन पे प्रेजेंटेशन देनी है, जस्ट एज इफ यू आर द ऑथर ऑफ द पेपर। उसको एक्सप्लेन करें, जो भी पेपर मुकम्मल तौर पे है, किस बारे में है, उसमें जो चीजें हैं। ये लिखना तो कुछ भी नहीं, सिर्फ प्रेजेंटेशन है। हाँ, आप बोर्ड यूज कर सकते हैं या पावर पॉइंट, जैसे आपकी मर्जी है। यू हैव 15 मिनट्स। ठीक है। तो आइडिया ये है कि वो छोटे छोटे पेपर्स हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ देम आर द कीज। काफी जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं या बेसिक थ्योरम्स, ये चीजें हैं। तो होपफुली आपको एक जो कुछ बेसिक चीजें हैं उनका एक ओवरव्यू मिलेगा एक दूसरे से। ठीक है। Okay, so in the last part of the course, we are going to concentrate on something that we haven't discussed so far. Explicitly, agarche implicitly, we did talk about it, and that concerns the dynamics, or you can say evolution of open quantum systems. So, for closed systems, you have by now quite a lot of experience of working with studying the dynamics of closed system, which is essentially the solution of Schrodinger equation, which can be written like this: that the wave function evolves according to the Hamiltonian of the problem, like this. So that's what you have studied in many other courses, in quantum mechanics courses, or in some application courses, or in terms of wave functions, you can also write it like this. Where this psi is the function of time. I'm using h bar is equal to 1 units, so I'm not worried about that. So, and just as we can study the dynamics of a closed system using Schrodinger equation, we can develop a formalism of studying the dynamics or evolution of open quantum system. And since open quantum systems are quite rich, because we are trying to study a system which is interacting with something else, so the information and interactions can flow into and out of the system. So there are more than one ways that people have developed to study the dynamics of these systems. And before I start with the general evolution, let me just discuss the closed system evolution, or you can say dynamics under unitary transformations for the density operator. So this is the evolution of wave function or cat under unitary dynamics. So this, you can also write it like this, that psi of t can be written as minus iota h t. So where this is, a unitary operator. And if this Hamiltonian is time independent, then this t can be anything. But even if this Hamiltonian is time dependent, I can take a small time delta t, that I can still use the similar, formalism for studying the unitary evolution of closed systems. So before we get to the general evolution of open systems, let's
quickly try to develop the differential equation for a mixed state, but still under unitary transformation. Okay, and then we will go on to the evolution under the open system hypothesis. So here you can think that system is still closed, but the starting state is not a pure state, it's a mixed state. So in other words, I want to see how rho of t, evolve. So let's start with this because this is the easier part. So let's say evolution of mixed state under unitary transformation. For this, let's say we can, we already know this thing, but let me write it. That suppose we have a density operator at rho is equal to 0. And then we want to find out the density operator at some, later time dt. We know that its evolution is given by this thing if the propagator is a unitary operator, where this u, if this is unitary, can always be written in terms of a Hermitian matrix like this. So this can be minus iota h dt, exponential minus iota h dt, and there's a dagger, so this becomes plus. So this is the evolution of rho in a small time dt. And what we can do, we can obtain a differential equation for rho from this. And that differential equation will give us a way to characterize the dynamics of the density operator under unitary evolution. And for that, let's start from the Taylor series expansion of rho dt around t is equal to 0. So this is rho of 0 plus rho of t evaluated at t is equal to 0. It's derivative evaluated at t is equal to 0 into dt plus, there are higher order terms of dt square. And what we want to do is we want to use that rho of dt and compare it with this up to time up to the term dt square and find out a differential equation or an equation for rho dot. So uske liye let's start from rho dt, and I can write rho dt from there as I minus iota h dt rho of 0 I plus iota h dt plus हायर ऑर्डर टर्म्स. ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल को खोलेंगे तो पहली दो टर्म्स ये आ जाएंगी, इधर भी दो, बाकी टर्म्स मैंने उधर कर दी. So this is equal to rho of 0 plus minus iota h rho minus rho h into dt. ठीक है, ये मैंने दो टर्म्स इकट्ठी कर दी जो कि इसको मल्टीप्लाई करने से आएगी और इसको और इसको आएगी, और जो आखिरी टर्म है इसको मल्टीप्लाई करके आएगी. Let's take that inside this thing. So this rho of dt can be written like this. And
If we now compare, there are two ways of going from this on. We can compare this thing at this thing, or we can take this limit that dt tends to 0. Then I can see from here that rho dt minus rho of 0 divided by dt, this is equal to minus iota h rho 0 plus terms of order dt, right? And in the limit dt goes to 0, this is the derivative at t is equal to 0. This is equal to minus iota h rho 0, and then this all goes away because I took the limit dt approaching 0. So ये हमारे पास differential equation आ गई है at t is equal to 0 for this density operator. And if we make जी कौन से वाला, ये वाला, तो ये मैंने वो जो रो ऑफ टी है उसको खोला है, ठीक है? तो एक्सपेंशन में जो हायर ऑर्डर टर्म्स है वो मैंने सेपरेट कर दी हुई, because when I took limit dt goes to 0, they goes to 0, and we are left with only this thing. If we make an assumption it's called Markovian assumption that this thing is valid not only at t is equal to 0 but at all t, then we can get this equation that rho dot at all t is equal to minus iota h rho of t. So under this assumption that this thing holds for all t, not only for going from t is equal to 0 to t is equal to dt, but also for all t. It's called Markovian assumption, which essentially means that the dynamics are the same for all time. Okay? Which would be true if we have a closed system, and yeah, because whatever the unitary operator is, it's going to be the same for all time. हाँ, ये closed system है. नहीं, लेकिन अभी ये श्रोडिंगर इक्वेशन से फिर भी फर्क है. श्रोडिंगर इक्वेशन जो है वो है सिर्फ प्योर स्टेट्स के लिए. Our system is closed, but the state in general is mixed state. हाँ, तो डिटरमिनिस्टिकली कर, ठीक है. And this is just a shorthand notation, commutative notation for h rho minus rho h. Okay, तो आप इसको यूं भी बेशक लिख लें, d rho by dt minus iota h rho plus iota rho h. So basically this is an equation that can that gives us a way for evolving the density operator under any Hamiltonian, just as you have Schrodinger equation for evolving the pure state under a given Hamiltonian. This is called Liouville von Neumann equation. लेकिन ज्यादातर लोग वैसे इसे सिर्फ वन न्यूमन इक्वेशन ही कह देते हैं. So I might also be using the same word. जी जी. देखिए हैमिल्टोनियन ये है कि जो आप सिस्टम को कर रहे हैं, इट डजंट मैटर उसकी स्टेट क्या है. हैमिल्टोनियन और सिस्टम की स्टेट आर टू इंडिपेंडेंट थिंग्स in a way that whatever we are doing to the system has nothing to do with what the state of the system is. ठीक है. फर्ज करें आपका एक एटम है, लेट्स से 2 लेवल एटम है, तो प्योर स्टेट ये है कि आपको पक्का पता है कि सिस्टम 0 में है या 1 में है, या लेट्स से प्लस स्टेट है, जैसे वो 0 1 की एक कोहेरेंट सुपरपोजिशन है, जो भी है, एंड यू सेंड अ फोटॉन.
of some, of an energy which is equal to this. So जो भी state है, it will have, an impact according to the. So वो जो आप photon भेज रहे हैं, that's your Hamiltonian. Okay. अब मिक्स स्टेट का मतलब ये है कि एटम तो एक ही है, ठीक है, लेकिन आपको पता नहीं है कि कोई और बंदा वो प्रिपेयर करके वहां पे रख गया है, या तो वो जीरो में या वन है, किसी या जीरो में या वन में पक्का, लेकिन ये पता नहीं कि वो जीरो में है या वन में। सपोज लाइक 30% प्रोबेबिलिटी है वो जीरो में है, 70% प्रोबेबिलिटी है वन में, एंड यू आर स्टिल सेंडिंग अ फोटोन। सो हैमिल्टोनियन जो है इट्स सेंडिंग अ फोटोन, सो दैट हैज नथिंग टू डू कि एटम जो है वो किस स्टेट में है। ओके, सो दिस गिव्स यू a more general prescription for evolving quantum states than the Schrodinger equation. जी जी। हम्म। ये तो मैंने इसकी टेलर सीरीज लिखी है, because this is then equivalent to Taylor series, and we can either make a comparison or let's say make this limit that dt goes to 0 and this is this. ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने ये जो इक्वेशन है, दिस इज ओनली वैलिड इफ योर system is evolving under unitary dynamics, but that's not the only thing that is possible for a quantum system. Quantum system can undergo non-unitary dynamics as well, and that's what we are now going to come to, that how can we study the evolution of uh, the quantum systems, open quantum system dynamics. अच्छा जी जी, assumption ये है कि the dynamics is the same for all time t, कि बेसिकली क्योंकि जैसे यहाँ मैंने लिखा हुआ है तो जो रो जीरो है, it goes to rho at time dt according to this equation. So it is rho zero going to rho dt, but now I'm assuming that this thing is valid in general like this, that rho dt plus t is, जो भी है यहाँ पे rho t है, so at any time t this is valid. So that's the Markovian assumption. इसको मैं थोड़ा जरा डिटेल से अभी बाद में बात करूंगा जब हम ओपन सिस्टम के इसका इन्वायरमेंट से क्या ताल्लुक है। जी जी। तो वो assumption आ गई ना, उसमें t अगर वेरिएबल पैरामीटर है तो विदाउट सेइंग यू आर सेइंग दैट दिस थिंग इज वैलिड फॉर ऑल टाइम t। ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ा हम जरा एक्सप्लिसिटली इसको कह रहे हैं। ओके, तो मैं बाद में इसकी एक एग्जांपल भी सॉल्व करूंगा, बट ये हो सकता है आप लोगों को कहूँ कि आप करें, बट फॉर नाउ आई एम गोइंग टू लीव इट हियर एंड जनरलाइज इट टू अ जनरल ओपन सिस्टम। जी है, क्योंकि इसको देखें, सो दिस इज वेरी सिमिलर टू द टेलर एक्सपेंशन, राइट? इफ यू रिप्लेस दैट रो डेरिवेटिव विद दिस थिंग, ये जो रो dt है इसके एक्सप्रेशन को कंपेयर करें वो जो ऊपर रो dt टेलर सीरीज है, सेम ही है ना। इफ यू टेक रो डॉट एज दिस, ठीक है, तो इस लाइन के बाद आगे वी कैन आइदर गेट द डेरिवेटिव हियर और यू कैन जस्ट कंपेयर इट विद देयर एंड कम टू दिस इक्वेशन। ओके, सो अब जो श्रोडिंगर इक्वेशन या जो वॉन न्यूमन इक्वेशन है, जनरलाइजेशन है इसकी डेंसिटी ऑपरेटर्स के लिए, वी आर नाउ गोइंग टू स्टडी एन इवन higher generalization of this thing, and there are several ways of doing that, okay, and ending up with the several forms of differential equations. Many of those are actually equivalent to each other, and all those equations, differential equations, they are called master equations. So master equation is just a differential equation for a density operator which has been devised to study the dynamics of an open quantum system. और हम इसमें से जो एक खास किस्म की मास्टर इक्वेशन है जिसको कहते हैं लिंडब्लॉड मास्टर इक्वेशंस, उनको देखेंगे इस कोर्स में, एंड मेनी अदर एक्चुअली कैन बी रिड्यूस्ड टू दिस
Lindblad type master equations. अच्छा, अब हकीकत ये है कि हम ऑलरेडी ये सीख चुके हैं कि क्वांटम सिस्टम की डायनामिक्स कैसे स्टडी करनी है इन द मोर जनरल सेटिंग, actually even more general than what we are going to do today, and that was operator sum formalism. मैं जस्ट थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि आप, ताकि जो हम मास्टर इक्वेशन स्टडी कर रहे हैं उसे ये ना समझें कि perhaps it's better than this. It's better in a sense that it's easier to handle, but this is not more general. The general is still this thing. We studied that the quantum maps of let's call them K. So we have some cross operators, let's say alpha 1 to n, and there's only one condition that these cross operators have to satisfy, that they have to sum to identity. Okay. Other than that, there's no other condition. And this is actually a general evolution method for state rho. And for example, you are given a state at rho is equal to 0 and passes through some general quantum map. Then you can get rho at a time, let's say dt, because in this time dt it goes through this. So rho of dt is some, well, let me write it even general. So let's say some t dt is some k alpha of t, rho of t, k alpha of t, dagger sum over alpha. So this actually can gives us a generic or general method of evolving our state rho. All अलबत्ता जो हमें जो चीज चाहिए, we need these k alphas for all time t. Okay, फर्ज करें t0 से 1 माइक्रोसेकंड तक ये k अल्फाज जो है वो हो सकता है फेज डैम्पिंग के क्रॉस ऑपरेटर हों, फिर 1 माइक्रोसेकंड से लेके 2 माइक्रोसेकंड तक ही हो सकता है k अल्फा एम्पलीट्यूड डैम्पिंग के हों, एंड सो ऑन. So in general, all of these k alphas are function of time, and we need to characterize these k alphas for all time t's to, and we can use then this operator sum formalism to write this rho at all time t plus delta t. ठीक है ना, क्योंकि आप you start from t0, जो t0 के k alphas हैं वो अप्लाई करें, you get rho of dt, फिर rho dt को यहाँ पे रखें और फिर जो k alpha उस टाइम पे हैं उनको रखें, and then you keep doing. और जो मार्कोवियन अप्रोक्सीमेशन है वो सिर्फ ये है that these k alphas are same for all time t. Okay, so in general जो k alphas है they can be different for different times. ज़रा जैसे यहाँ पे क्वांटम सिस्टम पड़ा हुआ है, अभी जैसे लाइटें ऑन है, हम बातें कर रहे हैं, तो इसके ऊपर जो भी k alphas अप्लाई हो रहे हैं वो कुछ हो रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद हम चले जाएंगे, लाइटें ऑफ हो जाएंगी, ये सिस्टम तो इधर ही पड़ा हुआ है, इसके ऊपर फिर k alphas जो है वो बदल जाएंगे. ठीक है. सो इन जनरल जो एवोल्यूशन है किसी भी क्वांटम सिस्टम की वो नॉन मार्कोवियन है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम when we are working with our systems, we are interested in a very short span of time, so we can imagine these k alphas to be constant, and then our dynamics is Markovian. And if on top of that you only have one cross operator, so then that cross operator has to be unitary operator, क्योंकि अगर अल्फा 1 है तो then k1 dagger k1 has to be identity, so इसका मतलब k1 unitary है, and if there's only one cross operator you end up with the von Neumann equation. Okay, अब लेकिन हम ये कहने जा रहे हैं कि लेट्स से अगर हमारे पास k अल्फाज 1 से ज्यादा हैं, then what is the differential equation? और इस कोर्स के अंदर I'm going to limit myself to only Markovian dynamics, in which I will assume that these k alphas are odd constants. Non-Markovian, it's not actually that difficult. We can always imagine our time-dependent operators to be, let's say, written with some कोई भी, let's say, जैसे function f of t होता है, जैसे time-dependent perturbation theory में करते हैं, I can write it as a superposition of, let's say, some constant functions, and
then the coefficients are time dependent. So there are ways to tackle it, but we are not going into that. We are going to limit ourselves to Markovian dynamics. Okay, but and the benefit of Basler equation is this, that we get one equation whose solution will give us, the time dependence of the state right away, instead of, going through it at each time interval through this cross operator sum. Albatta, what we lose when we are getting to this master equation is the generality of this operator sum formalism. Okay, so with this note, let's now get back to the Lindblad master equation. And again, my starting point is going to be the operator sum formalism. So let's say our then C operator at some time dt is given by, just going to write k alpha, and this is k alpha at time t is equal to 0. Rho of 0, k alpha tag. Okay. Acha, ab we are now given that alpha is at least 2. Okay. क्योंकि अगर अल्फा 1 है, we are back to one Newman equation. अच्छा, अब इस इक्वेशन को हम एक खास तरीके से रीअरेंज कर सकते हैं. इफ वी इमेजिन कि जो हमारा k नॉट है, let me begin alpha from 0 to somewhere, and the first cross operator, if I take it to be something like identity plus L naught dt, उसकी वजह ये है कि इस तरह से हम लेंगे तो we have one thing which is proportional to identity, plus there is some part, and I have put this dt there because at the end I only want to keep terms proportional to dt, because if you look at the previous expansion, rho of 0 plus rho dot t at t is equal to 0 dt, okay, we only need terms proportional to dt to come up with the differential equation for rho. तो उसमें जो हमारा k अल्फा है, उसमें जो पहला वाला k नॉट है, we see that कि इसको जब हम ओपन करें तो we first need a term proportional to rho 0. So इसका मतलब है there has to be some identity there as well. So I'm putting identity. And then we only need to keep terms until dt. So there has to be term something that is proportional to dt. And then I don't need to consider anything proportional to dt square, because at the end we are only going to be discarding that anyway when we take dt goes to 0. So the pehla cross operator hai, let's take it of this type, and we are not losing anything. Still everything is general, because isme L naught to hai, which you can still take anything right now. So I'm replacing one operator with another operator, but with a special form. Perfect. So with this thing, और इसको अगर आप लिख लें, इस तरह से लिख लें, k naught rho 0 k naught dagger plus this sum is now starting from alpha 1 k alpha rho 0 k alpha dagger. ये जो term है, let's see what this is, k naught rho 0 k naught dagger. This is I plus L naught dt rho 0 I naught plus dt. ये आ जाएगा rho 0 प्लस आ जाएगा L naught rho 0 plus rho 0 L naught into dt plus L naught rho L naught dt square. Yeah, okay. और जो बाकी k अल्फास हैं, let's choose them
to be of this form, where these L alphas are now are independent of time. The time dependence is only of this square root type. जो इससे हायर ऑर्डर टाइम डिपेंडेंस होगी वो सिमिलरली चूंकि डी टी स्क्वायर टाइप होगी, वी डोंट नीड टू कीप इट. और इन द अदर वर्ड यू कैन से दैट वी आर अज्यूमिंग के जो हमारे क्रॉस ऑपरेटर्स हैं दे आर लाइक equal to this. By the way, these are called cross operators, these are called Lindblad operators. So I'm just expressing these operators in the form of some other operators. Okay, so there's only one thing that we have to make sure. Thank you. Okay, so there's one thing that we have to make sure, and that is the normalization condition for the cross operators. जो कि ये है k alpha I. तो हमने उन ऑपरेटर्स को एक और फॉर्म में एक्सप्रेस किया है. So what we are going to do, we are going to get a condition on the new types of operators. तो इसको लिख सकते हैं हम k naught dagger k naught प्लस जो ये बाकी ऑपरेटर्स हैं, I'm keeping them separate for a reason that will become hopefully clear later on. So this means that ये बन जाएगा I प्लस dt L naught plus L naught dagger plus L alpha plus some terms of the order dt square is equal to I. देखें ये मैंने वो k naught की जगह पे वहां से वो वाला k naught पुट किया तो आ जाएगा I प्लस L naught dt. इसके साथ ये I प्लस L naught है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो एक I टर्म आएगी. ठीक है, ये बन है I प्लस L naught dt dagger into I प्लस L naught dt. तो I into I ये आ गया, L naught dagger ये आ गया, ये L naught into I ये आ गया, और फिर जो ये टर्म है ना L naught dt L naught dagger dt, ये dt स्क्वायर, ये मैंने सारी तरह इकट्ठी कर दी है. और इसी तरह इसके अंदर से भी जो dt वाली टर्म्स हैं वो ये हैं, क्योंकि ये k अल्फा जो है वो dt स्क्वायर L अल्फा के प्रोपोर्शनल है, और उसमें जो भी बाकी हायर ऑर्डर टर्म्स हैं they're all here. So this cancels with this thing, and let's also assume that this L naught, which is a general operator, is written as like this, where this is also Hermitian and this is Hermitian. I don't know if we talked about this thing or not, but any operator O can always be written as a Hermitian part. Let me use some different symbols. A Hermitian part and an anti-Hermitian part. ठीक है, आप Hermitian एंटी Hermitian को सेपरेट कर सकते हैं, और इनकी कैरेक्टरिस्टिक ये होती है A is equal to A dagger and B dagger is equal to minus B. और जितने भी एंटी Hermitian ऑपरेटर्स हैं ना, they can all be written as iota minus iota into some Hermitian operator. क्यों? क्योंकि अगर ये Hermitian है और माइनस आयोटा को जब इसका मैं B dagger लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, इस माइनस आयोटा का साइन आ जाएगा प्लस आयोटा, और ये H जो है ये बनेगा H dagger, बट ये Hermitian है, so this H dagger is still H, so this is iota H which is equal to minus iota B. तो कोई भी जो एंटी Hermitian ऑपरेटर है, इट कैन ऑलवेज बी रिटन एज माइनस आयोटा सम Hermitian. तो मैंने ये जो जनरल L naught ऑपरेटर है इसको लिखा है
हर्मिशियन प्लस एंटी हर्मिशियन, और जो एंटी हर्मिशियन है उसको फिर मैंने लिख दिया है माइनस आयोटा टाइम्स हर्मिशियन। सो अब मेरा ए भी हर्मिशियन है और एच भी हर्मिशियन है। सो एक ऑपरेटर को कुछ और दो हर्मिशियन ऑपरेटर्स की फॉर्म में लिख दिया, एंड यू विल सी द बेनिफिट वेरी शॉर्टली। अब मैं इसको अगर यहां पे पुट करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा डी टी, एल नॉट की जगह पे आ जाएगा ये ए माइनस आयोटा एच, इसकी जगह पे आ जाएगा ए प्लस आयोटा एच, जीरो, और ये कैंसिल हो गया, नहीं ये कैंसिल हो गया सॉरी, एंड फॉर द लिमिट व्हेन dt goes to 0 these terms will go to 0 क्योंकि मैं I can divide by dt and this would be independent of dt and this will still have dt. So in the limit dt goes to 0, this goes to 0, and I will have 2a is equal to minus sum of minus this sum, जहां पे इस ऑपरेटर का जो हर्मिशियन पार्ट है वो मुझे पता चल गया, जो दूसरा एंटी हर्मिशियन पार्ट के अंदर एच हर्मिशियन है वो अभी भी अननोन है, बट द हर्मिशियन पार्ट इज एट लीस्ट नाउ फिक्स्ड, सो दैट द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन इज सेटिस्फाइड। पहले जब हमें ये होता था क्रॉस ऑपरेटर जब भी हम लेते थे, वी ऑलवेज हैड टू मेक श्योर एक्सप्लिसिटली कि जितने भी क्रॉस ऑपरेटर्स हैं वो सारे इस कंडीशन को पहले सेटिस्फाई करें, देन वी कैन गो अबाउट वर्किंग आउट द ऑपरेटर सम फॉर्मलिज्म। लेकिन अभी हमें ये फायदा हुआ है कि हमने जो के नॉट को सेपरेट लिखा हुआ है कि के नॉट के अलावा आप बाकी जो मर्जी ऑपरेटर चूज कर लें, के नॉट विल ऑटोमेटिकली फिक्स द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। क्यों? क्योंकि विद दिस ए अगर मैं ये ए यहां पे यूज कर लूं, दिस विल ऑलवेज बी जीरो, ठीक है ना? सो इंस्टेड ऑफ नॉट टेकिंग एल नॉट टू बी जनरल, आई विल ऑलवेज टेक एल नॉट टू बी a Hermitian part equal to this minus iota some arbitrary Hermitian part, and we'll see later on that this corresponds to Hamiltonian. Okay, so let's use this a, and let me again get back to the operator sum formalism, and from there I can find rho dt like this for all alphas greater than 1, k alpha rho 0 k dagger. So let's write this thing, k naught की जगह पे यही I plus L naught dt, तो पहली टर्म आ जाएगी रो 0, ठीक है, और दूसरी टर्म आ जाएगी a माइनस आयोटा h रो 0 प्लस dt, और दूसरी टर्म आ जाएगी रो 0 आयोटा a प्लस आयोटा h dt, एंड सिमिलरली इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा L alpha rho 0 L alpha dagger dt plus the terms proportional to dt square, ठीक है। मैंने जस्ट इसको ओपन कर लिया। इसमें से जो ये माइनस एच वाला पार्ट है दैट आई कैन सेपरेट आउट, एंड दैट बिकम्स एच रो 0, क्योंकि ये कम्यूटेटर है माइनस छोटा कम एच रो माइनस रो एच आ जाएगा, और जो ए है वी कैन सब्स्टिट्यूट इट बाय द वे। ए जो दूसरी टर्म है ना उसको अगर मैं लिखूं तो ये बनेगा, ये कम्यूटेटर बन रहा है ए रो प्लस रो ए, तो जो प्लस वाला है आई एम यूजिंग इट दिस विद कर्ली ब्रैकेट। जी जी, कौन से वाली?
ये वाली जो के नॉट है ना, इसकी जगह पे रखा है आई प्लस एल नॉट डी। ठीक है, तो इसको खोलेंगे तो ये रो आई और आई के साथ भी होगा, तो ये रो आ जाएगा। तो फिर तो इधर निकाल ही देते हैं, ये बनेगा, तो इधर कर लेते हैं। के नॉट है आई प्लस एल नॉट डी टी, रो आई प्लस एल नॉट डी टी। तो ये आई रो आई हो जाएगा रो, फिर दूसरी टर्म आ जाएगी एल नॉट रो डी टी, एल नॉट रो डी टी, फिर ये आ जाएगी आई रो एल नॉट डैगर, रो एल नॉट डैगर डी टी, और फिर एक टर्म आएगी एल नॉट डी टी रो एल नॉट डैगर डी टी। ये डी टी स्क्वायर वाली टर्म जो है ये यहाँ पे है, समझ आ गई। और फिर एल नॉट की जगह मैंने ये रख दिया ए माइनस अयोटा एच, और ये एल नॉट डैगर की जगह पे आ जाएगा ए प्लस अयोटा एच। ठीक है, ओके, सो ये आ गया, आ जाएगा एल अल्फा रो जीरो एल अल्फा डैगर डी टी प्लस ऑल टर्म्स ऑफ डी टी स्क्वायर। अच्छा, अब we can make the Markovian assumption right here that this thing is not only true while going from 0 to dt, but going from any t to dt, Markovian assumption. Yeah, we can even delay it one step later. But what I can do is, acha, sorry, yahan pe dt bhi hai. Let me take this row 0 on the left side and then divide everything with dt. So we will have rho dt minus rho 0 divided by dt, which is rho dot. This is equal to minus iota h rho plus a rho commutator plus 1 L alpha rho L alpha dagger plus terms of order dt. So under the Markovian assumption, we now have a differential equation. So the Markovian Lindblad master equation is now rho dot is equal to minus iota h rho plus sum over alpha greater than 1 L alpha rho L alpha dagger plus a rho. और जो a है I can substitute it here as well. और a की जगह पे क्या है, माइनस हाफ अल्फा ग्रेटर देन 1 एवरीथिंग, सो ये आ जाएगा सम एल अल्फा रो एल अल्फा डैगर प्लस एंटी कम्यूटेटर ऑफ एल अल्फा डैगर एल अल्फा रो। सो यहाँ पे माइनस हाफ, सो ये आ गई है लिंडब्लाड मास्टर इक्वेशन, या इसको यूं भी करके लिख लें, एल अल्फा रो अल्फा डैगर माइनस हाफ एल अल्फा डैगर एल अल्फा रो माइनस हाफ रो एल अल्फा डैगर एल अल्फा। अब इसमें जो एडवांटेज एक है वो ये है कि whatever L alphas you choose greater than 1, the normalization condition for the cross operator is always satisfied. क्यों? क्योंकि जो K नॉट ऑपरेटर था ना,
उसका जो हर्मिशियन पार्ट है, we had chosen A in such a way equal to this that the normalization condition is satisfied. So from when we are using this thing, we don't have to worry about if we are choosing operators properly or not. And this H that we just introduced here as, you know, an arbitrary Hermitian part of that general operator can be identified with the Hamiltonian of the system. अगर आप इसको compare करें one Newman equation के साथ. And this, by the way, is sometimes called the dissipator because this induces the decoherence in the quantum system. And this is just the regular propagator part of the equation. Any question on this thing? For the differential equation, it's exactly valid because we have taken limit dt goes to 0. नहीं, truncate तो नहीं किया, वो term रखी हुई थी सारी, but when we put dt 0, that went away. क्योंकि जब dt से divide किया दोनों तरफ तो वही terms थी जो जिनमें dt था. तो लेकिन चूंकि हम इसको usually कंप्यूटर पे जब implement करते हैं, then the accuracy is only proportional to the time interval that you take for your simulations. क्योंकि उसमें न्यूमेरिकली हम रो को सॉल्व कर रहे होते हैं, रो 0 पे फिर रो 1, तो वो जितना छोटा होती ये ज्यादा अच्छी तरह वैलिड होगी. बट व्हेन वी समटाइम वी आर एबल टू सॉल्व इट एनालिटिकली, उस सूरत में you know we can take dt as small as we want, and then this is exactly valid. ठीक है. ज्यादा मुश्किल तो नहीं लग रही. थोड़ी सी इसकी ये शक्ल ड्रोनी है, अलबत्ता ऑलमोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग. ठीक है. और ये क्रॉस ऑपरेटर से मुझे ज्यादा अच्छी लगती है इसलिए कि क्रॉस ऑपरेटर जब भी आपको कोई फिजिक्स गिवन हो और आपसे कहा जाए कि इसके करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर्स बिल्ड करें, एंड देन यू कम अप विद दैट, इट यूजुअली बिकम्स ट्रिकी. ठीक है. फॉर एग्जांपल मैं एम्पलीट्यूड डैम्पिंग वाला प्रॉब्लम थोड़ी देर बाद या कल सॉल्व करूंगा. सो एम्पलीट्यूड damping is essentially the spontaneous decay of your system from upper level to lower level and not happening anything to the lower level. तो अब अगर Lindblad operator की बात करें तो it's very easy to model. All I have to do is just think about this, that there is only one physical thing that is going on, and let's say my Lindblad operator, only one operator, I can take it, suppose 0 1 के अगर सिस्टम आपका 1 स्टेट में है, it will go to 0 state. That's it. क्योंकि जो photon emit होगा, it will become part of the environment. I don't have to think of the emitted photon while taking care of the system. That's it. So just L1 लूंगा, क्योंकि जो L naught है उसके बारे में मैंने कुछ नहीं कहा, but I don't have to say anything because L naught is already taken care of by the normalization thing. तो इसके करस्पॉन्डिंग जो भी इक्वेशन बनेंगी, आई कैन सॉल्व. जो अगर इस एटम को एडिशनली आपने कोई और फोर्सिंग फंक्शन भी दिया हुआ है, इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में, किसी ऑसिलेटिंग फील्ड में रखा हुआ है, ऑल दैट विल कम इन द हैमिल्टोनियन पार्ट. ठीक है. एंड दिस dissipation part of the system can be modeled by this operator, and that's it. But if I want to do it with the cross operator, then I'm in trouble. क्यों? क्योंकि ये जो single operator is not a unitary operator. You can check. And since it's not a unitary operator, then it means I have to have at least one other operator, let's say some k naught, और उसको इस तरह से कंस्ट्रक्ट करूंगा कि जो k naught डैगर k naught प्लस k1 डैगर k1 जो है वो मेरा आइडेंटिटी हो जाए. But here I don't have to worry about that. So वहां पे I'll have to work with 2 operators. और यहाँ पे only जो physics वाला part है, I just concentrate on that one. जो mathematics
है इसके करस्पॉन्डिंग, अगर जो फिजिक्स भी उससे रिलेटेड है, बट दैट्स ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ इन द इक्वेशन. Okay, so अच्छा, normally when we are working with this type of equation, instead of working this way, we work with another equation in which we define our operators, these Lindblad operators, in this form. Okay, there is some other parameter, let's call it rate parameter, और उसका जो स्क्वायर रूट है उसको हम इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं. उसकी वजह ये है कि जो क्रॉस ऑपरेटर्स हैं वो डायमेंशनलेस हैं. ठीक है, क्यों? क्योंकि यू आर टेकिंग रो टू रो, सो योर ऑपरेटर हैज टू बी डायमेंशनलेस. तो देखिए ना, जो ऑपरेटर सम है कि योर रो इज गोइंग टू अनदर रो, सो इनको डायमेंशनलेस होना पड़ेगा. लेकिन उस वहां पे हमने जिस तरह से लिंडब्लॉड ऑपरेटर्स डिफाइन किए हैं, दे आर नॉट डायमेंशनलेस एनीमोर, क्योंकि आई थिंक हमने इस तरह से किया था कि अल्फाज वर डिफाइंड एज dt square L alphas. So now these Lindblad operators have a dimension of 1 over time square root. So let's say if we want to have a dimensionless Lindblad operators, then what we can do, we can replace these operators with something like this, where this is a rate parameter. This has unit of 1 over time, क्योंकि यहाँ पे time square root है, ये 1 over time square root है, so ultimately then this will not have any dimension. और उसका एक एडिशनल फायदा ये है कि जो हमारे जो इस तरह के ऑपरेटर्स हैं, लेट्स से एल अल्फा डैगर अल्फा, दे विल ट्रांसफॉर्म टू this thing, and this is mod square, or this is, let's define it some gamma alpha. So this is, ये हमने start किया था general complex number से, but this has to be a real number, real positive number. So wherever there is L alpha dagger and L alpha, let's replace it with something like this, and we get a differential equation like this, minus iota h rho t plus gamma alpha L alpha rho L alpha dagger minus half L alpha dagger L alpha NT commutator like this. और जो gamma alpha मैंने common ली है. So these are the rates. So you can think of this quantity as rate associated with each operator. For example, there are like 2-3 physical processes going on in your system, and there is, let's say, one operator for one process, and suppose there is something else happening to the system, there's another operator for that thing, and so on. So with each operator we can now associate a rate, जिसका inverse है, it's proportional to probability. This thing is happening with this rate, and this thing is happening with this rate, and so on. So these parameters now have direct physical significance. So this is usually the equation that we work with most of the time when we are working with open quantum system. Because when all L alpha 0 for greater than 1, yeah, you can like for all gamma alpha 0 for alpha greater than 1, we come to an equation which is exactly the von Neumann equation if this H is the Hamiltonian. Okay. On the other hand, you can propagate this equation back and see के जो cross operators हैं, अगर let's say instead of many cross operators there is only one cross operator, and let's call it K naught, and you define that K naught to be I minus A minus iota H, and then this A will ultimately turn out to be 0,
क्यों? क्योंकि इसके अलावा ए जो है इन टर्म्स ऑफ ऑल अदर ऑपरेटर्स इज लाइक दिस। तो अगर ये सारे जीरो हैं तो दिस इज गोइंग टू बी जीरो, सो यू ओनली लेफ्ट विद दिस थिंग एंड यू विल एंड अप विद दिस इक्वेशन। एंड देन अगर आपके एक ही ऑपरेटर है तो दैट हैज टू बी corresponding to the unitary operator. Okay, any other question? जी जी। फायदा जो है, देखिए अगर तो सिंपल सिचुएशंस की बात करें तो देन देयर माइट नॉट बी मच एडवांटेज। फर्ज कर दें आप का मकसद है कि आपको टाइम t जीरो पे स्टेट गिवन है और टाइम t इज इक्वल टू लेट्स से 1 सेकंड पे आपने स्टेट फाइंड करनी है और 1 सेकंड तक जो कुछ हो रहा है आपको क्रॉस ऑपरेटर गिवन है, ठीक है। Then you either use cross operator, yeah, you use this thing, you end up at the same result right away. And probably this is going to be more complex because you have to solve differential equation. Operator sum use करें, you can get it in one step. अलबत्ता let's say your job is कि आप जीरो से लेके 1 सेकंड तक ही स्टेट देखना चाहते हैं, बट यू ऑल्सो वांट टू सी कि 0.01 पे क्या स्टेट थी, 0.001 पे क्या थी, 0.02 पे, 0.03 एंड सो ऑन. सो व्हेन यू आर इंटरेस्टेड इन सीइंग स्टेट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, then if you use cross operator formalism you have to do this for all of those times, ठीक है, for each time, क्योंकि ये जस्ट एक सिंगल स्टेप एवोल्यूशन आपको प्रोवाइड करता है. But वहां पे you have an equation that is that the solution can give you rho as a function of time, and you can see how rho is evolving with time. Ultimately, मैं just ये दोबारा stress करूंगा, this is derived from cross operator sum formalism. This is more general. This can easily take into account Markovian and non-Markovian dynamics. This so far is only Markovian. Non-Markovian gets more complicated. But the advantage here is this, that in many situations we can get a time dependent density operator, sometime analytically, and even if we have to do it numerically, this is easier than this one. कुछ भी हो सकता ज़ाहिर है, आप अब कुछ भी ले लेते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है देखना कि वो आपने क्यों लिए हैं. ये देखिए इसमें आपके पास दो चीजें, एक है हैमिल्टोनियन, और हैमिल्टोनियन इज एसेंशियली द यूनिटरी एवोल्यूशन. सो अब आपका सिस्टम जो इवॉल्व हो रहा है, इन जनरल यू कैन थिंक ऑफ इट एज as a combination of unitary and non-unitary evolution. So unitary evolution can always be corresponded to a Hamiltonian, ठीक है, and the non-unitary evolution part is coming from this part, where you can take any operator as long as it satisfies the complete positivity and trace preservance conditions, which essentially mean that it has a cross representation form, जो कि इसी को हमने यहाँ पे ट्रांसलेट किया है, जिसका मतलब है you can choose any L alphas because we have now structured it in such a way because of this term that whatever L alpha you choose, it will always correspond to mathematically okay thing. लेकिन फिजिकली वो उस चीज को करस्पॉन्ड करता है कि नहीं करता, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. वो तो हम कुछ भी ले लें, इवन यूनिटरी एवोल्यूशन भी, इट्स यूजुअली अ वेरी फॉर स्ट्रेच जब हम कहते हैं कि ओके दिस इज द हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम, कि रियली ये फिजिकली इसको करस्पॉन्ड करता है कि नहीं करता, या मे बी देयर आर मेनी अदर थिंग्स गोइंग ऑन. तो लेकिन ये आपको कुछ हम एग्जांपल्स करेंगे जब, तो उस पे होपफुली आपको आइडिया होता जाएगा कि कैसे इनको बिल्ड अप करना, ठीक है. लेकिन अल्टीमेटली इसमें हम जो भी करते हैं या इवन फिजिक्स में जो भी करते हैं, इट्स ऑल सॉल्विंग डिफरेंट मॉडल्स, ठीक है. मोस्ट ऑफ द टाइम दोज मॉडल्स आर इंस्पायर्ड बाय फिजिकल सिचुएशंस, और उनके जो मॉडल के जो सॉल्यूशंस हैं, most of them correspond to some physical situations, but you can always set up a more general equation
that satisfy all the physical principle, and there might not be any physical situation that we know of right now that that model corresponds to. ठीक है? तो एज ए फिजिसिस्ट जो हमारी जॉब है बेसिकली वो यही होती है ना कि हम किसी फिजिकल सिचुएशन को मॉडल करना चाहते हैं, तो वी डोंट ट्राई टू मेक as accurate model as possible, but we try to make a model that as easily explains what is going on as possible. जिसका मतलब है we have to try to identify the things that matter the most. वहीं पे तो हमारी इंटेलिजेंस आती है, अदरवाइज सॉल्व करना मॉडल करना कंप्यूटर्स कैन डू बेटर देन दैट. ठीक है, जैसे सोलर सिस्टम को ले लें. So the stroke of genius of Newton was not that his model was extremely accurate, but it pinpointed the most important thing that could explain what's going on in the heavens. Agarche it was inspired by physical reality, but the purpose was to explain the most with the least. And that's जो अच्छी physics है, that's always comes from this thing. जब भी आप प्रॉब्लम के बारे में सोचें, you always think in this term कि simplest possible model कौन सा है जो इस चीज को इसकी जो ज्यादातर फिजिक्स है उसको एक्सप्लेन कर सके. Okay, anyway, so for a quiz today, I want you to solve this equation. Actually, not even this equation, but Giri. So I want you to solve an equation in which all L alphas are 0. Balki, let's say all gamma alphas are 0, and we have single qubit. So this is one thing, this is second thing. And let's say the Hamiltonian is for simplicity, let me take it like this. In general, by the way, any Hamiltonian can be written as some h at I plus some hxx plus hyy plus hcz. ठीक है, क्योंकि जो I, X, Y और Z हैं, they form the basis for all 2x2 Hermitian matrices. So in general, you can write it like this, but this particular Hamiltonian is a simplified or a special case of this thing. And suppose you have this Hamiltonian, so it means you have to solve the von Neumann equation. Because I have put all the rates equal to 0. जो कि हो सकता है आपने Schrodinger equation को इसके लिए solve किया भी हो, that you have an external, let's say a magnetic field and a spin. So that's what this situation physically corresponds to. So let's say this is Hamiltonian. Single qubit mean that you can take your rho to be I plus R dot sigma, where R this the position vector on the Bloch sphere. So find the expression for component of R as a function of time. Okay, this is the problem. कि one Neumann equation को solve करके तो जो let me give you initial conditions as well. So suppose this is the Bloch sphere, and initially let's say our R vector is Rx naught, Ry naught, Rz naught. कहीं पे भी generally placed है, and you have to find Rx, Ry, Rz as a function of time by solving this equation. उसके लिए यह है कि h पुट करें, rho पुट करें, ये वाला तीनों तरफ जो है वो x, y, z के कोएफिशिएंट कंपेयर करके डिफरेंशियल इक्वेशंस हासिल कर लें, और सिंपल सी होगी, उनको सॉल्व करके ये फाइंड कर लें.
ये सारे रो ऑफ टी हैं। हाँ ये इक्वेशन ये है ना। हाँ डॉट ये